and by conduct. जो भी declaration होगी, ठीक है, regarding his death, regarding cause of his death, that can be oral, that can be written, and that can be by conduct also. The word dying declaration explain the word itself. Section 32 clause 1 evidence act define क्या करते हैं? When the statement is made by the person, देखो इस particular section 32 जो अपनी statement है वो क्या कहते हैं? Statement by a person who cannot be called as a witness. This is actual statement of section 32. After this, we have 8 clauses in section 32 which define different sort of things where a person who gives a statement cannot call as a witness, but his or her statement will be treated as a relevant one. Okay, because we have already gone through hearsay evidences are not admissible in the court as evidence, but there are certain exception circumstances where hearsay evidences can also be admissible as evidence. In this regard, at very first point, 32 clause 1, we have what? Dying declaration. Dying declaration. Okay. So, what it says that when the statement is made by the person as the cause of his death or as any of the circumstances of the transaction which resulted in his loss of life, in case in which the cause of that person's death comes into question, such statement made by any person are relevant whether the person who made them was alive or was not at the time when they were made under the expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question. So basically, section 32 clause 1, what it talks about, when a person gives a statement regarding cause of his death, when he has probable that situation, probable circumstances that at the end his death will be caused, ठीक है, कि अगर एक पर्सन को इतनी probability है कि भाई death हो ही जाएगी, ठीक है, I have that expectation क्या, that probability, that higher level of probability that at any cost death will be happen कि death होएगी इसके बाद मैं नहीं बच सकती, और then I have given statement about cause of my death, that who caused my death, या what is the reason behind causing my death, या किसी दिन मेरा झगड़ा थी या कुछ भी थी, so that is what your relating to your cause of death, या फिर प्लस क्या कह रहा है, या तो cause of death रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट देके जा रहे हो, या ਤੁਸੀਂ किसी हो ऐसी ट्रांजैक्शन बारे स्टेटमेंट देती है which resulted in your death, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्या होएगी, स्टेटमेंट will be considered as a dying declaration. The statement made by the deceased person will be treated as evidence and admissible in the court of law. The reason behind this can be followed by Latin maxim nemo mortuus presumptor mentri, which means that man will not meet his maker with lying on his mouth, ठीक है, it's a famous maxim. Maxim is your nemo mortuus presumptor mentri, that means a man will not meet his maker with lying on his mouth, कि कोई भी पर्सन मरता हुआ आदमी अपने मुंह से झूठ लेके या अपने नाल झूठ लेके अपने गॉड नु, अपने मेकर नु जाके नहीं मिलता, ठीक है. More precisely, in our Indian law, it is a fact that dying man can never lie or truth sits on the lip of dying man. Hence, the dying declaration is admissible and considered as evidence in court and can be used as a weapon to punish the culprit. तो क्या कह रहे हैं? जनरली भी क्या है, more precisely, इंडियन लॉ क्या कहता है, एक मरदा हुआ बंदा कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है. सो जो भी मर रहा है हमेशा क्या है, सच बोल के ही जाएगा. दैट इज व्हाई dying declaration make as admissible under Indian Evidence Act, ठीक है. बट ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज एक पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे गया वी विल कंसीडर इट एज इट, ठीक है. क्या करते हैं उसमें एडमिसिबल करन तो पहला मौसम ठंडा भी है, उस स्टेटमेंट ਨੂੰ एडमिसिबल करन तो पहला क्या करया ਜਾਂਦਾ है, स्पेसिफिकली गीजर लग गया है मम्मा, कोरोबरेटिंग एविडेंस ਦੇ ਨਾਲ प्रूफ करवाया ਜਾਂਦਾ है कि और कोरोबरेटिंग एविडेंसेस लेके आओ, ठीक है, ताकि पता चल सके कि जो पर्सन दी डाइंग डिक्लेरेशन कही जा रही है कि पर्सन ये उसने वॉलंटरी फिट स्टेट ऑफ माइंड किसी और पर्सन को डिसीव करने के लिए नहीं है. इस रिगार्डिंग गुरजीत प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो. Okay, next is what are the type of dying declaration.
ਕੋਰੋਬੋਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰੋਬੋਰੇटिंग ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕॉन्ट्राडिक्टिंग, दूसरा ਹੁੰਦਾ कोरबोरेटिंग। कॉन्ट्राडिक्टिंग जो उसਦੇ अगेंस्ट आ ਰਹੇ ਹੋਣ एंड कोरबोरेटिंग इज ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰ ਜਾ ਰਹੇ फेवर ਚ आ ਰਹੇ ਹੋਣ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। Now next come to type of time declaration. Now what are the type of time declaration? It can be given on oral, it can be given in written form, it can be given by gestures, by sign, by thumb impression. ठीक है, क्या कह रहा है? There is no particular form to be employed in making a time declaration. It can be oral, written, gestures and signs, thumb impression, incomplete, and can also be in the form of question answer. It can be in any sort of form. There is no prescribed format for dying declaration. It can be given in any sort of way. However, there must be a distinct and definite assertion on the part of the person who produced a statement. Possibly, the declaration should be in written form in the exact words stated by the person who made the statement. But the only condition is that particular dying declaration statement made in written form in as it is exact wording whatever that particular victim has been said before his death. ऐसा नहीं है कि उसने कुछ और किया और तुसी अपनी वे च इंटरप्रेट करके अपनी लैंग्वेज इंटरप्रेट करके उसको लिख दिया। जिस वे च जिस लैंग्वेज जो बोल रहे हो तुसी एज इट उसमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ओनली देन इट कैन बी मेड एडमिसिबल। नेक्स्ट इज when a magistrate records a dying declaration, then it should be in question answer form, as the magistrate will opt the maximum information rightly, as in some cases dying declaration become the sole way to help in the conviction of the accused. But the condition is, if a magistrate is recording dying declaration, then it should be in a question answer form. मतलब जिन्ने भी possible चीज़ा discover करवाना चाह रहे हैं magistrate, he will ask that particular questions only, and the other person, the victim who is about to death, वो person क्या करेगा? उस particular questions के regarding सिर्फ क्या करेगा? Answer करेगा। Now, let us discuss about these. The first one is question sign. In the case of Queen Empress versus Abdullah, the appellant was charged with the offense of murder before the court of session. That he had murdered one Dulari, a prostitute, by cutting her throat through razor. It seems that one morning Dulari was with her throat cut was taken to the police station, and from there to the dispensary. She was alive till the morning. The post-mortem report shows that a windpipe and the anterior wall of the gilt has been cut through. इसे क्या थी जो अपीलेंट थी, ठीक है, बिकॉज अपील से जा चुका है केस, क्या है कि उससे चार्ज क्या लगाए गए थी कि भाई उस पर्टिकुलर पर्सन ने जो लेडी थी उसने डेथ करी थी केस की में बाय रेजर कटिंग हिज थ्रोट। ठीक है, तो क्या है वैसे उसकी डेथ क्या थी, 2 दिन बाद डेथ हुई थी उसकी, बट क्या स्टिल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया कि भाई उस लेडी की डेथ उसी जो थ्रोट कट करा गया थी उसी करके उसकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। When Dulari was taken to the police station, she was questioned by her mother in the presence of a sub-inspector. She was again questioned by the sub-inspector, deputy magistrate, and subsequently by the assistant surgeon. She was unable to speak but conscious and able to make gestures and signs because her throat was cut down. That is why she was unable to speak. So he gave all the answers asked by his mother, the inspector, the sub-inspector, the magistrate by the gestures and the signs. Magistrate asked Dulari as who had wounded her, but due to the injured condition, Dulari was unable to speak. After that, magistrate mentioned several times names one by one and asked if they had wounded her or not. ठीक है, तो क्या थी मैजिस्ट्रेट ने वन बाय वन सबसे पहले क्या पूछा कि भाई तेरा मतलब तेरे नाल ये चीज करी किसने, थ्रोट कट किसने करया, तो दुलारी वाज अनेबल टू स्पीक, दैट इज व्हाई शी कांट स्पीक एनीबॉडीज नेम। तो मैजिस्ट्रेट ने सेकंड क्या ऑप्ट करे ऑप्शन कि वन बाय वन नेम लेना स्टार्ट करया जो भी सस्पेक्टेड पर्सन सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ठीक है, कि भाई इसने करया इसने करया, तो जिस पर्सन ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਲਾਰੀ ਨੇ मतलब अपना गेस्टर जो साइन दिए कि हाँ जी पॉजिटिव वे च कि यहाँ आदर्शन दिता इसी पर्सन ने करया, तो उस स्टेटमेंट क्या कर लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया। Subsequently, magistrate asked whether Abdullah had wounded her. For that, Dulari waved her hand, made the sign in the affirmative. The magistrate recorded a statement. After that, question was put to her that if she has been wounded with a knife or a sword. In this regard, Dulari makes a negative sign. Again, magistrate asks her if she has made मतलब वन बाय वन क्वेश्चन इस पर्टिकुलर केस क्या कराया गया थी
हर चीज का उसमें क्या क्वेश्चन आंसर फॉर्म च क्या करा गया सीगा उस तो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, कि भाई उसे डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करेगी थी बिकॉज इट वाज ही वाज मैजिस्ट्रेट वाज रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन। तो हर चीज का तो क्वेश्चन पूछा गया, उसने क्या है बाय हिज गेस्टर बाय हिज साइंस उसने क्या करया हर एक चीज का हर एक स्टेटमेंट का आंसर करया, ठीक है, कि जिस पॉसिबल वे आउट कि वो जिन्ना साइन जिन्ने गेस्टर दे सकती थी कि भाई अफर्मेटिव नेगेटिव की ये चीज नहीं हुई वो चीज हुई है, तो उस चीज को रिकॉर्ड कराया गया एज अ डाइंग डिक्लेरेशन and that was also made admissible. Similarly, निर्भया रेप केस सबको पता है उस भी क्या होया सी लड़की दी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब सी that she can't speak anything, so ओथे भी क्या करेंगे सी उसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन was recorded according to his gesture and sign, ये उसको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, जो भी उसने पॉसिबली दे पाई, ठीक है, by his gestures that was recorded as a dying declaration. So, what held in the case, the dying declaration made through sign, gestures or by nods are admissible as evidence. ठीक है, तो क्या होंगे अगर किसी पर्सन ने क्या करे है इवन गेस्टर्स के थ्रू साइन के थ्रू भी अगर अपनी डिक्लेरेशन देती है स्टेटमेंट देती है दैट विल आल्सो बी मेड एडमिसिबल अंडर दिस पर्टिकुलर section. Next is oral and written. It can be oral, it can be in written form. When the person gives the name of the murderer to a person present and written by any of them, then it is a relevant dying declaration. However, people may dispose of the name of the murderer orally. An oral dying declaration is admissible in evidence as an exception to the general rule of evidence that hereby evidence is no evidence in the eyes of law. So hearsay. The oral dying declaration made before his wife, father-in-law, and other near relative were made in the conscious state. ठीक है, वैसे क्या कहते हैं अगर किसी ने orally statement दी है that will not be considered admissible क्योंकि हो सकता है मैं कोई statement दे रही हूँ मेरी ही statement अगर तुसी आगे किसी ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अपनी language ਦੋਗੇ you will not be able to speak like that कि भाई जो मेरी as it is अपनी आदत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ या कुछ कटा देने हैं एज इट इज जो वर्डिंग बोली गई है वैसी वर्डिंग नहीं याद रख पाएंगे अपन ये पता होता कि ये चीज गल बोली है बट आप अपने तरीके ना तो क्या है इसलिए एडमिसिबिलिटी कर देंगे कि भाई उसने क्या पता कुछ और स्टेटमेंट देती होगी और जब तक साडे कोल पहुंच जब तक क्या है स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो सकती है बट इट इज स्टिल एडमिसिबल ऐसा नहीं है कि एडमिसिबल नहीं होगी इन पकनानाय स्वामी वर्सेस एम्प्रे the court held that circumstances of the transaction which resulted in the death of the declarant will be admissible if such transaction has some proximate fact ठीक है तो क्या है circumstances of the transaction will also be made admissible if it shows certain probability some sort of proximity effect that death why death has been happened or why death has been caused ठीक है अगर वो चीज पता लग रही है तो जो circumstantial evidences of the transaction that will also be considered for recording your time declaration also ठीक है कि time declaration ले ली उस तो बाद circumstantial evidences transactions को note down करा जाएगा कि हाँ जी उसकी जो time declaration whether it is collaborating with corroborating with that particular situation or not ठीक है next is incomplete time declaration time declaration made by the person which is found to be incomplete cannot be admissible as evidence when the condition of the deceased is grave and at his own request, a statement made by him in the presence of the doctor was later taken by the police, but could not be completed as the deceased fell into a coma from which he could not recover. It was held that time declaration was not admissible in court as the declaration appears to be incomplete on the face of it, but the statement, though it is incomplete in the sense, but convey the declarant all necessary information or what he wanted to state. तो क्या कह रहे हैं अगर कोई भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड दैट विल नॉट बी टेकन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन बट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कुड बी टेकन एज अदर एविडेंस ठीक है रेलिवेंट एज अदर एविडेंस ओनली बट इनकम्प्लीट जो डिक्लेरेशन होगी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगी उसमें एज डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे एडमिसिबल नहीं कर सकती ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है जो बहुत ही ग्रेव इंजरी लेके हॉस्पिटल से हॉस्पिटलाइज है ठीक है एडमिटेड है उसकी जो वो अपनी डिक्लेरेशन देने लग गया स्टेटमेंट देने लग गया रिगार्डिंग हिज हेल्थ की किਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ही आधी स्टेटमेंट देती है उस तो बाद क्या हो गया वो कोमा चला गया ठीक है और जिसको रिकवर नहीं हो पाया
this is what? This is incomplete declaration, so you cannot consider as a dying declaration, or you cannot make admissible in this particular section, but it can be made relevant and admissible in as evidence in other sections also. The deceased stated, I was going home when I came near the house of Abdullah Masjid. Suhail shot me from the bush. He ran away. I saw this was the declaration made by the deceased and further was unable to answer the question. It was held that there is no question of incompleteness so far as the context of the case is concerned. Okay? तो क्या है एक पर्टिकुलर एग्जांपल देती किसी केस की कि भाई एक जो स्टेटमेंट गिवन बाय अ डिसीज्ड पर्सन कि उसने सारी स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने घर जा रहा थी मेरे घर जाते हो एक पर्टिकुलर पर्सन अब्दुल्ला उसने मैंने क्या करा बिहाइंड द बुश फ्रॉम ही शॉट में और उस तो बाद क्या हो गया मैंने इंजरी हुई ठीक है और इन स्टेटमेंट देने तो बाद क्या हो गया उसकी डेथ हो गई तो कोर्ट ने क्या किया कि दिस इज नॉट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट उसने दसिया भी उसका ये चीज कदों हुई किसने करी किसने ना करी ठीक है सो इट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट एंड कैन बी टेकन एज अ डाइन डिक्लेरेशन Next is question answer form. Next type of dying declaration is question answer form. Dying declaration can be made in the form of question answer. The deceased in some of her statement did not state the actual part declared by the appellant. She merely answered the question put to her. The court held that when questions are put differently, then the answer will also appear to be different. At first glance, the detailed description of the offence may appear to be missing, but the statement of the deceased construed reasonably. However, when the magistrate records the dying declaration, it must be preferred to be recorded in the form of a question answer. Must be preferred if there is nothing to doubt that the person who records statement made by the deceased exact word to word would not make any difference merely because the same was not recorded in the form of question and answer ठीक है तो क्या कह रहा है इस पर्टिकुलर चीज अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ क्या ਹੁੰਦਾ है ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन आंसर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करते हो you are unable to record whole description of the case ठीक है मतलब ਤੁਸੀਂ whole description की भाई ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਨੇ ਕਰਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ but you can take answers of relevant question which are required to be proved death of a victim ठीक है कि भाई कैसे डेथ हुई ਤੁਸੀਂ relevant questions ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨੀ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਫਾਰਮ that is why question answer form ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ is made admissible. Next is reason for admitting dying declaration in evidence. A dying declaration is admitted in evidence that is truly based on the principle of nemo mortis, presumptive mental, man will not meet his maker with a lie in his mouth. Dying declaration does not require any corroboration as long as it creates confidence in the mind of the court and free from any form of torturing. ठीक है तो क्या है dying declaration जब भी रिकॉर्ड होएगी does not require any corroboration as long as it create confidence in the mind of the court ठीक है जनरली क्या है डाइंग डिक्लेरेशन दी corroboration उਦੋਂ तक नहीं करवाने की जरूरत होती जब तक कि कोर्ट के माइंड से डाउट आ जाए कि भाई जो पर्टिकुलर डाइंग डिक्लेरेशन दी है पर्सन ने उसे दूसरे पर्सन ने डिसीव करने की दी हो सकती है या फिर किसी ने टॉर्चर के अंदर आके किसी फोर्स के अंदर आके उसने स्टेटमेंट गिवन करी होगी ठीक है In Ukaram versus State of Rajasthan, court held that dying declaration is admitted upon consideration is made in extremity when the maker of the statement is at his bed and every hope of this world is gone and every motive of falsehood is silenced and mind induced to speak only truth. Indian law recognizes this fact that a dying man seldom lies. Okay. Next on the fitness of the declaration should be examined. कुछ भी declaration रिकॉर्ड करी जा रही है तो क्या है फिटनेस ऑफ हिज माइंड कि उसका माइंड उस टाइम से कितना काम कर रहा है कितना नहीं काम कर रहा है वो शॉक ਦੇ अंदर आके स्टेटमेंट दे रहा है या फिर उसको समझ है अपने पूरे होश आवाज ਦੇ अंदर आके क्या दे रहा है कोई स्टेटमेंट दे रहा है सो फिटनेस ऑफ हिज माइंड इज mandatory to examine before recording his dying declaration या after recording his dying declaration मतलब एक उस चीज का प्रूफ उस चीज की रिपोर्ट उस चीज का टेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ particular person dying declaration ਹੈ and it is completely authenticated genuine one and given by a person when he was perfectly in his state of mind कि भाई
चाहे इंजरीज बहुत ज्यादा सी गया बट मेंटली ही वाज स्टेबल कि उसने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें पता थी कि क्या दे रहा है और पूरे अपने उसकी होशोवास में क्या करवाई है, रिकॉर्ड करवाई है। Next is who should record the dying declaration. Now, who will be the person who will record the dying declaration? Any person can record the dying declaration made by the deceased, but the person who is recording the dying declaration must have some nexus with the deceased, either circumstantially or by some fact. However, the doctor or police officer hold more value as compared to the normal person. ठीक है, तो क्या है, कोई भी पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है, पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है। सिर्फ क्या हो जाता है, जब कोई डॉक्टर या कोई मैजिस्ट्रेट सामने रिकॉर्ड हो रही है तो ऑथेंटिसिटी ज्यादा हो जाती है। अदरवाइज इट कैन बी मेड टू एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल, एंड इट कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी इंडिविजुअल पर्सन। As far as the dying declaration concerned, the magistrate entrusted to record the dying declaration as a statement recorded by him is considered more evidential rather than statement recorded by the doctor, police officer and by the normal person. But क्या है, ड्यूटी बाउंड है मैजिस्ट्रेट कि भाई जो भी उससे कोई स्टेटमेंट लेके आए उसमें दोबारा मैजिस्ट्रेट में क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। The Supreme Court has found this to be true in law, at least in cases where the person dies of burn injuries. Court hold the opinion that the law on the issue can be summarized to the effect that law does not give any direction that who can record a dying declaration, but just provided that magistrate is above all the person in subject for recording the statement, nor is there any definite format or procedure for the same, said to bench of Justice B.S. Chauhan and Deepak Mishra. While questioning the High Court order in the case of dowry death acquittal case, the person who recorded a dying declaration must be satisfied that the makers is in a fit state of mind and conscious while making the statement. Moreover, the dying declaration can be recorded by a person or even by the police officer, but if it is recorded by the judicial magistrate, that it will have more credential value and reliability. ठीक है, तो क्या है, कोई भी पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डेक्लेरेशन, बट व्हेनेवर इट इज रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट इट हैज मोर रिलायबिलिटी, मोर क्रेडेंशियल वैल्यू, मोर एविडेंशियल वैल्यू देन द रिकॉर्डेड बाय अदर पर्सन, वेदर इट इज अ डॉक्टर, वेदर इट इज अ इंस्पेक्टर, वेदर इट इज अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, okay, rest I'm sending you this particular link, please check करना। Okay, check your group, please open the link and read out the notes। ठीक है, हाफ हो चुके हैं, हाफ अपन कल करेंगे, बट कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा क्लास। ठीक है, लिंक सेंड हो चुके हैं, गो थ्रू बोलो जितना भी आज करे है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।